Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 4. How are you all? Fine? Okay, today I'm very sorry the video will be sent late because there was a problem in my computer. Now it seems that it has been repaired, I think. It has been recovered. So just I am recording the video. Okay, please open your books on page number 24. This is your book. Okay. So, you know that we had discussed reproduction last time in the previous lecture. So, continuing that, plant fertilization occurs. Plant fertilization means that अफज़ाइशी नस्ल वो किस तरह होती है, how they increase in number as humans have increased in our family, in your family. So how the plants, the number of the plants increases. So it is said that plants fertilization occurs when a bird or insect or the wind mean hawa, transfer pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. Understood? क्या होता है? Pollen जो होते हैं, pollen, I will show you the pollen. See, pollen are powder-like materials in the flower. These are the pollen. Okay, and this is the insect or a bee. It does what? It transfers these pollens from the anther of one plant, you know, anther, to the stigma. Stigma was that opening of that or that female part of the flower. So the bird transfer these pollen from the anther of the one plant to the stigma of another. Okay, understood? A stigma of another plant. तो इस तरह from the stigma, फिर stigma से क्या होता है? The pollen goes down to the tube. Stigma के नीचे क्या होता है? Tube होता है ना, and tube के नीचे फिर ovary. तो ovary की तरफ वो चला जाता है, where it fertilizes an egg. वहाँ पे एक अंडा सा बन जाता है, and a seed is formed, और फिर बीज बन जाती है. अल्लाह ताला ने इस तरह की वो ताकत दी है उस ओवरी में कि वो पॉलन जो दूसरे प्लांट के एंथर से ट्रांसफर हुआ है वो वहाँ पे अंडा और फिर अंडे से सीड बन जाता है फिर. ओके, तो इस तरह वो सीड बन जाता है. जब वो प्लांट खुश्क हो जाता है वो सीड हम लेके किसी दूसरे ज़मीन में उसको काश्त कर देते हैं और फिर उससे दूसरा पौधा बन जाता है, या हम उसको ट्रांसफ़र कर सीड को ले जाते हैं, या कोई दूसरा चीज़ बर्ड्स या विंड वगैरह वो सीड को वहाँ से ले जाते हैं. ठीक है. ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर दैट प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स. ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें प्लांट होता है तो फिर किस तरह वो उसमें फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन होती है वो वी डिस्कस्ड दैट. ओके, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होती हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है? मोस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स. वहाँ पे ये पॉलन और पॉलन एंथर से आना, फिर स्टिग्मा के जरिए नीचे ट्यूब में जाना और फिर ओवरी में जाना, ये नहीं होता. उसमें फ्लावर होता ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से होंगे? ठीक है मिस्टर जिगर. सो वहाँ पे स्पोर्स होते हैं. व्हाट आर स्पोर्स? आई विल शो यू. दीज आर स्पोर्स. These are spores. These. Okay. These are very small, made of one cell. ये एक सेल से बने होते हैं, and it has the ability to reproduce. इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये किसी दूसरे ज़मीन के किसी दूसरे हिस्से में जाके it has the ability to reproduce. तो इनको स्पोर्स कहते हैं. So most non-flowering plants produce spores. जहाँ पे फ्लावर नहीं होता वहाँ पे स्पोर्स होते हैं instead of seeds. The spores are scattered by wind or water
and start to grow. क्या होता है, हवा या पानी के जरिए those spores are scattered, वो scatter हो जाते हैं मतलब वो फैल जाते हैं, ठीक है, मुंतशिर हो जाते हैं जमीन के दूसरे हिस्सों में. इफ दे, और जब वो स्कैटर हो जाते हैं ना, फैल जाते हैं, सो अब क्या होगा, इफ दे लैंड समवेयर वेयर द कंडीशंस आर राइट, तो वो जगह जहां पे वो लैंड करते हैं, अगर वो जगह वो लैंड करते हैं, इफ द कंडीशंस आर राइट, अगर वहां पे सॉइल हो, वहां पे पानी हो, तो फिर दिन दे ग्रो अगेन, ओके, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. लेकिन अगर सीमेंट्स में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्श पे आ जाते हैं, हमारे स्कूल के फर्श में आप देखें, अगर वहां पे हवा उन स्पोर्स को वहां से उड़ा के मुंतशिर करके लेकर आए, इफ दे आर ब्रॉट टू द सीमेंटेड फ्लोर, तो फिर तो कंडीशन फेवरेबल नहीं है ना, सो देन दे विल नॉट ग्रो. ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, वी डिस्कस्ड in this paragraph. We discussed that in non-flowering plants how they reproduce. अब तीसरी किस्म की भी होते हैं. Okay, I will tell you, in our school, अगर आपने देखा होगा, in college section we have planted mint mean पुदीना. अब उस पुदीने में क्या है भाई, उसमें फ्लावर्स भी नहीं बनते और वहां पे स्पोर्स भी नहीं होते, ठीक है. इस तरह in this they have given a picture, स्ट्रॉबेरी जो है, in this also we have the same, neither flower nor spores. तो फिर क्या होता है इस तरह में, some plants reproduce by growing new shoots, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, बास फ्लावर जैसे होते हैं जिसमें खुद ब खुद न्यू शूट्स आ जाते हैं, न्यू शूट्स भी नई शाखें निकलना शुरू हो जाते हैं, डेट फॉर्म रूट्स, और वो शूट्स जो हैं, वो छोटे छोटे शाखें जो हैं, देयर आर रूट्स, उसके रूट्स बन जाते हैं. इस तरह के कई प्लांट्स हैं इन और स्कूल एंड इन और कॉलेज, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, फिर न्यू प्लांट्स में वो डेवलप हो जाते हैं. अगर आप आए ऑफिस के सामने, मैंने आई हैव कल्टिवेटेड अ प्लांट, वो मैंने किस तरह कल्टिवेट किया, मैंने किसी दूसरी जगह से उसको काट के वहाँ पे लेकर आया हूँ, वहाँ पे आई प्लांटेड एंड ग्रोड दैट ग्रीव. ओके, तो ये भी शूट्स खुद पैदा कर लेते हैं. तो तीन किस्म की रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस की है. द स्ट्रॉबेरी प्लांट डज दिस, स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो भी इस तरह करता है, खुद शूट्स निकालता है और फिर उसके रूट्स निकलते हैं एंड इट ग्रोज. नाउ एक्टिविटी टाइम. नेक्स्ट टाइम यू आर आउटसाइड, लुक एट सम प्लांट्स फॉर अ वाइल, कुछ वक्त के लिए कुछ प्लांट्स को देखो. सी इफ एनी इंसेक्ट आर बर्ड्स लैंड ऑन देम, तो चेक करो if birds or insects land on them. Many times you can see, if you go to the garden, you will see the insects. If you don't see the birds, you will see the insects, the bees. If they do, see if you can spot them landing on anther. तो खुद देखो, they will land, वो उतर आएंगे on the anther. Okay, anther flower, another flower. If you do, you will have seen pollination taking place. अगर आप इस तरह देखें, अगर आपने देखा कि if insects are coming and if birds are coming, so this is pollination. Okay, pollination means that pollens are transferred from one place to another. Okay, so this is the end. More inshallah next time we will discuss. Tomorrow inshallah we will be discussing these questions. Okay, sorry for the late sending of the video, but the problem was with the laptop. This is the end of the lecture. See you tomorrow. Try to work hard. Goodbye.